Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Today we shall study English 8 of 10th class, chapter number 3, that is try again. Dear students, today I will teach you the summary of this poem with complete Urdu translation, meanings of the difficult words. So let's start the summary. The poem was written by British educational writer and poet William Edward Hickson, commonly known as W.E. Hickson. The poet advocates the value of perseverance and determination. He says that learning the value of perseverance is very important. Students, now I will tell you the meanings of the difficult words. एजुकेशनल तालीमी, राइटर मुसन्निफ, पोएट शायर, कॉमनली आमतौर पर, नाउन मशहूर होना, एडवोकेट्स वकालत करना, परसिवरेंस मुस्तकिल मिजाजी, डिटर्मिनेशन साबित कदमी, वैल्यू कदर कीमत, इम्पोर्टेंट अहम. स्टूडेंट्स, now I translate it into Urdu. The poem was written by British educational writer and poet William Edward Hickson, commonly known as W.E. Hickson. ये नज़म बरतानवी तलीमी मुसन्निफ और शायर विलियम एडवर्ड हिक्सन, जिसे आमतौर पर W.E. हिक्सन के नाम से जाना जाता है, ने तहरीर की. The poet advocates the value of perseverance and determination. शायर मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी की कदर कीमत की वकालत करता है. He says that learning the value of perseverance is very important. वो कहता है कि मुस्तकिल मिजाजी की कदर कीमत से वाकिफ होना नहायत अहमियत रखता है. We should not be afraid of difficulties in our path, and we should not be afraid of failures. If we persist, we shall succeed one day. Failing once or twice does not matter. There is no shame in struggle. The journey of 1,000 miles begins with one little step, and anybody can stumble along the way. Now I will tell you meanings of the difficult words. Afraid खौफज़दा होना, difficulties मुश्किलात, मसाइब तकालीफ, पाथ रास्ता, failure नाकामियाँ, persist डटे रहना, succeed कामयाब होना, failing नाकामी, matter मामला, shame शर्म, स्ट्रगल कोशिश करना, जर्नी सफ़र, बिगन शुरू होना, लिटिल स्टेप छोटा कदम, स्टम्बल लड़खड़ाना. नाउ आई ट्रांसलेट इट into Urdu. We should not be afraid of difficulties in our path, and we should not be afraid of failures. हमें अपनी राह की मुश्किलात से खौफज़दा नहीं होना चाहिए और हमें नाकामियों से डरना नहीं चाहिए. If we persist, we shall succeed one day. अगर हम डटे रहे तो एक रोज़ हम कामयाब हो जाएंगे. Failing once or twice does not matter. एक दो बार की नाकामी कोई मायने नहीं रखती. There is no shame in struggle. जद्दोजहद करने में कोई आर नहीं. The journey of 1,000 miles begins with one little step. 1000 मील का सफ़र भी एक छोटे से कदम से शुरू होता है.
and anybody can stumble along the way, और रास्ते में कोई भी लड़खड़ा सकता है. The thing to do is to steady yourself and keep on going. If we fail once, we should try again so that we may turn our failure into success. We should not be discouraged by the hardness of our job. If other people can succeed, then so can we. If we keep trying, we will get our reward one day. Now I will tell you meanings of the difficult words. Failure नाकामी, सक्सेस कामयाबी. डिस्कर्ड हिम्मत हारना. हार्डनेस सख्ती. Now reward इनाम. Now I translate it into Urdu. The thing to do is to study yourself and keep on going. करने का काम ये है कि खुद को संभाला जाए और सफ़र जारी रखा जाए. If we fail once, we should try again so that we may turn our failure into success. अगर हम एक बार नाकाम हो जाएं तो हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपनी नाकामी को कामयाबी में बदल सकें. We should not be discouraged by the hardness of our job. हमें अपने काम की दुश्वारी से डरना नहीं चाहिए. If other people can succeed, अगर दूसरे लोग कामयाब हो सकते हैं तो then so can we, तो हम भी हो सकते हैं. If we keep trying, we will get our reward one day. अगर हम कोशिश करते रहें तो एक रोज हमें सिला मिल जाएगा. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.